Now this one, principle of lever. So first the lever. It is also a machine, kind of machine, levers. And here, if I see the terminology of a lever, so lever have a fulcrum. Fulcrum means basically it turns and passes through a point of the lever called fulcrum. That is the thing. Fulcrum. We'll see. Now, first thing is principle of a lever. Principle of a lever. So first we'll see. Suppose this is the lever. Now this one is the fulcrum. This one is the effort, and this one is the load. Now if you see, this is a general type of lever, and generally this is class 1 lever. Class 1 lever looks like this only. Now if I name this fulcrum as, uh, I can name it O. Now if this point is A, where the effort is there, this point is B. So what I can say here, this AO is the effort arm, effort arm, and this BO is the load arm. And here, basically, a lever works on the principle of moment. A lever works on the principle of moments. Okay, so moment of load about the fulcrum. What is actually that principle of moment says? Moment of load about the fulcrum. Fulcrum is equal to moment of effort about the fulcrum. About the fulcrum. That means what? See, moment we know. Moment is equal to force into distance. Now, moment of effort by the fulcrum is what? If suppose this is the distance AO, so that means I can say moment means this force into distance, and this moment is nothing but uh, clockwise, sorry, counterclockwise direction. This moment, whereas in this side, this load into the distance, this will be clockwise direction. So what I can say, the moments, the two moments are equal and opposite. Okay, are always opposite in direction. So what I can say, the moment of load about the fulcrum is nothing but load into load arm is equal to effort into effort arm. Load into load arm is equal to effort into effort arm. So load is here L and load arm is BO. So L into BO is equal to effort is E
and FO term is AO, this one into AO. Now what I can do, just do load by effort is equal to, that means load by effort means this is load divided by effort. Here you just take it, bring it over here, so this will go down of this AO, so that is AO by BO. And load by effort is nothing but mechanical advantage. Mechanical advantage. Now here in this type of lever, you can see as this load arm is equal to the effort arm, so therefore generally this is the law of what I can say, this lever. And here the mechanical advantage is 1, you can say it is 1. And as well as you will be here, mm, generally it is, generally if it is exactly in the same point, the middle of it, AB, definitely it will be 1 in that case, or the class 1 lever. Okay. And that means, that is the concept. And another thing is there, like, uh, this type of thing you can do another concept also. If the mechanical advantage is 1, then the load arm is equal to the effort arm. So MA is 1, then load arm equal to the effort arm. Now if MA is less than 1, therefore in that case FO term is less than load arm. And if MA is greater than 1, then FO term is greater than load arm. Okay, so these are the type of thing that we can have in this case, okay. And now generally in class 1 lever, what we'll see, in class 1 lever always it is like that. You have one side effort, another side load, and middle side fulcrum, like this. So it's mechanical advantage, VR, velocity ratio, or mechanical advantage of this class 1 lever can be greater than 1, less than 1, or equal to 1. That can vary. But for class 2, so this is for class 1 lever. Now class 2 lever, class 2, you see the position. Fulcrum is over here, fulcrum. And this is the position of load. This is the position of load. This is the position of load, and this is the position of your effort. Effort. The position changes. And your effort arm is always greater than the load arm, because this is your effort arm. Effort arm. And this is your load arm. Okay. So your effort arm is always greater than the load arm. Effort arm is always greater than the load arm. And here what will happen generally in the second class, uh, that means that class 2 lever always, MA, that is mechanical advantage, and VR, velocity ratio, is always more than 1 in this case. That class 2 it is always more than 1, always more than 1.
Now the thing is that if it is always more than one, we know na mechanical advantage and velocity ratio more than one, that means it is force multiplier. So class 2 lever act as a force multiplier. Class 2 lever acts as a force multiplier. Okay, we can see something like those type of cutter. So for betel nut, सुपारी काटने के लिए जो चीज यूज होता है ना, those type of thing. If you see, this is the fulcrum and ये पोर्शन में वो चीज रहता है काटने का, सुपारी का ये इधर सुपारी इसमें रहता है, तो दैट इज द लोड एंड एफोर्ट हम लोग इससे देते हैं, इस साइड से देते हैं, तो एफोर्ट यहाँ पर हो रहा है, लोड ये है, ये फलक्रम, तो दैट इज क्लास 2, एग्जांपल ऑफ क्लास 2. एंड क्लास 3 जो है उसमें कैसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है? क्लास 3 के लिए तुम्हारा फलक्रम इसमें रहेगा, फलक्रम इसमें है, बीच में रहेगा लोड, सॉरी एफोर्ट, बीच में रहेगा एफोर्ट और इस तरफ रहेगा लोड, लास्ट में रहेगा लोड. सो तुम्हारा लोड आर्म हमेशा क्या होगा? एफोर्ट आर्म से ज्यादा बड़ा होगा. लोड आर्म, load arm is always greater than the effort arm. So effort arm is this, sorry, effort arm this one, effort arm. So load arm is always greater than the always greater than the effort arm. Okay. So that is what you can understand from that concept. Now जो क्लास 2 के लिए हम लोग देखे थे कि उसका मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ये भी हो रहा है, एंड वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है, लेकिन इसमें वो लेस देन हो जाएगा. तो इन दिस केस दिस क्लास 2 के लिए उसका क्या हो जाएगा? वो क्लास 3 के लिए, सॉरी क्लास 2 तो ग्रेटर देन हो गया था, और इसके लिए हमेशा वो हो जाएगा, इट विल बी this mechanical advantage and this ratio is less than 1. So less than 1 matlab this will be velocity or speed multiplier. So जो class 3 है, class 3 lever will be like this. Class 3 lever will be like this. Now if we see some type of example of this thing, like here in levers, we know the class 1 levers, like where basically this class 1 lever, uh, that thing, like some example if you want to see that seesaw, you know seesaw जो होता है ना, उस बीच में ऐसे फलक्रम रहता है, इसमें कोई एक बैठा है, इसमें भी कोई एक बैठा है, तो सीसॉ भी क्लास 1 है. ठीक है, सीसॉ होता है, सीजर जो होता है काटने वाला कैची होता है, वो भी क्लास 1 है. क्लास 2 में नाट क्रकर में बताया, बॉटल ओपनर क्लास 2 में है. तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1. और क्लास 3 के लिए जो तुम्हारा कभी देखियो सुगर क्यूब के लिए एक टोंग यूज किया जाता है, सुगर को, सुगर क्यूब के लिए ऐसे टाइप का, जिसमें एक्चुअली यहाँ पर उसका फलक्रम रहेगा और तुम एफोर्ट दोगे, बीच में प्रेस करोगे,
और इससे कुछ लोड लेके हम लोग ऊपर खींचेंगे। तो शुगर क्यूब का टॉम हो गया, नाइफ हो गया, फिर फिशिंग रॉड हो गई, ये सब क्लास 3 के लिए है। ये सब क्लास 3 के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्यों ह्यूमन बॉडी में क्लास 1 लीवर कहाँ पर होता है? ह्यूमन बॉडी में क्लास 1 लीवर कहाँ पर होता है? ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग देखेंगे, मतलब एक्शन में देखेंगे ह्यूमन बॉडी में, तो जैसे हम लोग नॉडिंग करते हैं ना, मतलब हेड को इस तरह करके नॉडिंग करते हैं ना, आगे पीछे करते हैं, नॉडिंग करते हैं ना, जैसे, तो वो नॉडिंग का एक्शन जो होता है वो क्लास 1 वाला होता है। और क्लास 2 वाला जैसा है, हम लोग अपना टो के बल पर, टो के बल पर अगर हम लोग थोड़ा सा अपना वजन को उठाए टो के बल पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लास 2 का कॉन्सेप्ट। और हाथ से कुछ वेट को अगर ऊपर की तरफ उठाए, हाथ के ऊपर रख के बाइसेप बाइसेप का इस्तेमाल करके, तो क्लास 3 लीवर हो जाता है वो वाला। यही ह्यूमन बॉडी के साथ इसका जो एग्जाम्पल हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यही था हमारा क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द लीवर।